महाराष्ट्र फिर से गोल्ड मेडल का मैच खेलेगी, लेकिन कल अंडर 21 बॉयज में उनके सामने केरल थे, आज गुजरात हैं। मेरे साथ कल भी रविकांत थे, आज भी रविकांत है। वेलकम बैक सर। Thank you, Sonu Taneja. This is the Maharashtra team which will be looking to make a clean sweep of the Kho kho gold medals. But at the moment, they've got to face Gujarat. This is how they've featured in the league matches. Both teams in the same pool. Maharashtra had 2 innings wins against Andhra Pradesh and Karnataka. Beat Gujarat 2011 and then again went on to beat Telangana in the semi-finals by an innings. So that certainly is some kind of a domination. Gujarat not so easy. Lost to Maharashtra 11-20 but beat Karnataka 21-12 and Andhra Pradesh 16-10 and then knocked out Kerala in the semi-finals 13-10. So Telangana and Kerala share the bronze spoils, but Maharashtra and Gujarat will be fighting for the gold. The toss happened a short while ago and the toss was won by Gujarat, who have decided to run first, which means that they will be defending. This is how the Maharashtra team lines up. रामाजी कश्यप टीम के कैप्टन हैं। 9 प्लेयर शुरुआत करते हैं, 3 प्लेयर बेंच पे रहते हैं। नरेंद्र कड़े, विशाल कुसाले और ऋषिकेश शिंदे ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं। हॉकी की तरह यहाँ भी आप रोलिंग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सौरभ अहीर टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं। और महाराष्ट्र पहले चेजिंग कर रही है, यानी जितने विरोधियों को आप टच करेंगे उतनी आपको फर्स्ट इनिंग्स लीड बनाने का मौका मिलेगा। एंड दिस इज गुजरात साइड। Prakash Kamit, Nilesh Rathod and Naresh Bhandia. That is the top 3 runners for Gujarat, and let's see if they have sent out that first set or are looking at a change in strategy. So the match, remember, it's 9 minutes per innings. Each time gets 9 minutes to score. Gujarat won the toss and chose to defend, which means that they will be providing the targets first. How many can Maharashtra knock off in their first innings of 9 minutes? All set to get underway, and there goes the match referee's whistle. Light blue is Gujarat with white sleeves. Maharashtra chasing in navy blue and red. विजय वेतुड़ इस समय टारगेट बने हुए हैं और पहला टैप अभी तक आया नहीं है। चांस पर टैप, नो अक्रॉस द लाइन, टच हुआ भी नहीं। डिफेंडर थोड़ी सी देर के लिए ध्यान उनका भटक गया था एंड ही इज वेरी लकी दैट ही इज स्टिल देयर। यहां डायरेक्शन का फाउल उठने के बाद जिस डायरेक्शन में आपके कंधे गए उसी डायरेक्शन में आपको दौड़ना पड़ेगा। और अभी टारगेट चेंज कर लिया गया है। राजेश टारगेट है, फर्स्ट टैप क्लेम विद इन फर्स्ट 40 seconds. Good start there by Maharashtra, switched targets and picked up that first point around the post and getting it slapped on the back of Rajesh Rathwa, the Gujarat captain, taken out first. So possibly attacking the stronger player first, which means that a quick point taken by Maharashtra. Second runner now from Gujarat, again switching targets very, very cleverly. Remember, this is the boys under 17 final gold medal clash. 3 minutes is what Maharashtra would be looking at to knock out as the first set. Minute and a half gone. देखो, पहले 3 मिनट में अगर पहला सेट आपने टैप कर लिया, आउट कर लिया, तो अगले 6 को आप जल्दी आउट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहला 3 का जो सेट है वो आपके सबसे अच्छे डिफेंडर होते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करें 9 मिनट्स के अंदर। तो 3 मिनट में अगर पहले 3 टच हो गए तो अगले 6 मिनट में कम से कम 8-9 टच करने का टारगेट होगा। क्लेम्स अ टच, विल गेट इट, यस, सेकेंड डिफेंडर आउट। महाराष्ट्र 2 हो चुका है उनका स्कोर। There you see that touch across the center line, but celebration time definitely. The feet both planted. Remember, defenders are not, the chasers are not allowed to cross the center line. This time a good sprint there. Player going in the wrong direction, immediately penalized, which means that they must change, and the diving touch claimed. So 2 minutes 20 seconds is all that Maharashtra needed to clean up the first set, and that's a very, very strong start. Good diving back tap there on shirt number 7, Vijay Vigard.
क्लेम्स ऑफ अ टच, पॉइंट नंबर 4। 3 मिनट में 3 का टारगेट रखा होगा, लेकिन पौने 3 मिनट से पहले 4 टैप मिल गए हैं महाराष्ट्र को। सबसे बड़ा पावर हाउस महाराष्ट्र क्यों है ये देखिए, ये तकरीबन वेस्ट टैप किया, बड़ा करीबी मामला था सैमुअल गैमिट के ऊपर, लेकिन अंपायर का बहुत अच्छा निर्णय। Maharashtra made a very, very strong start, and just over 3 minutes gone. Already 4 runners taken out from the Gujarat side. Now the target is Dilip Mokashi. Runners try and run as much time on the clock as they can, and so far Gujarat haven't been too successful. The first set was taken out in 2 minutes 22. The second set will try and make it as difficult as possible. Bit of a confusion there in the Maharashtra chasers. Gujarat trying to prolong and change and picked up. No flag. अपील बड़ी जोरदार थी महाराष्ट्र के चेजर की। यहां एक और अपील है, फिंगर स्टेज डाउन। 2 बार महाराष्ट्र की अपील खारिज कर दी गई है। जजमेंट खो देने का वक्त है। पोल के पास जाके वापस आके जो खो दी जाती है, दैट इज जजमेंट खो। डायरेक्शन गलत चले गए चेजर। उसके बाद जब विसल बजती है तो आपको तुरंत अपने नजदीकी साथी को खो देना है। यस, द 5th टैप। 4 मिनट 10 सेकंड में 5 पॉइंट महाराष्ट्र ने हासिल कर लिए हैं और 10+ का स्कोर उनके लिए बड़ा रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है रवि 9 मिनट के अंदर। Well, definitely a very, very strong start, and that is the second set also taken out. 6-0 the lead for Maharashtra. There you see the diving attempt there by Saurabh Ahir, and second set taken out in less than half the time. We are at just past the 4.5 minute mark. Remember, it's the 9 minute down the clock that is going to count, and how many runners can Maharashtra take out? They would be targeting to get into double figures in this innings itself. Won the league encounter this time, not touch. Oh, the bit of a stumble there for the Gujarat runner, but recovers Prakash Kamit. प्रकाश कामित फिलहाल नंबर 1 पे थोड़ा सा दूर है। अब प्रकाश कामित को ही टारगेट किया जा रहा है। डाइविंग अटेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन प्रकाश ने अच्छा चेन डिफेंस किया, बीच में से निकल गए। ये टच होना चाहिए, ये टच होना चाहिए ना, गलत डायरेक्शन का फाउल दिया गया है। प्रकाश इज लकी, ही इज स्टिल वेरी मच अलाइव एंड इन प्ले। 5.5 मिनट में 6 पॉइंट, यानी 3.5 मिनट बाकी हैं। अच्छा जिग-जैग मूवमेंट डिफेंडर का। आखिरी सेट गुजरात का, ये भी आउट हो जाएगा तो जो पहला सेट आया था वो वापस आएगा। कबड्डी की तरह यहां भी कोई टीम परमानेंटली ऑल आउट नहीं होती। पूरे 9 मिनट आपको मिलते हैं रनिंग और चेजिंग करने के लिए। पॉइंट नंबर 7। Picking the third set off, and this is a good diving attempt by Siddesh Thorat, and now Gujarat have got some thinking to do. They've got to run some clock down, otherwise they could be coming under pressure, as there is also the threat of the follow-on. Gujarat have got to look at that as well. Meanwhile, direction foul called on the chaser. You cannot get stop and start running in the direction you were not facing. That's why the chasers sit facing the opposite sides alternately. 6.5 minutes gone, 2.5 remaining on the clock. एक सब्स्टिट्यूट कर लिया है महाराष्ट्र ने, अपने लेफ्ट कॉर्नर चेजर को रिप्लेस किया है। जो अभी चेज कर रहे थे वो सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर हैं, उन्हीं का डायरेक्शनल फाउल है। पर हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल की तरह फाउल यहां आपकी टीम के खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं लेकर आते, सिर्फ आपकी जो चेजिंग है उसकी रिदम खराब करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी फाउल होगा आपको वापस आके खो देनी पड़ेगी, यानी चेजिंग की रिदम खराब होगी। And plus you run on for a few seconds off the clock. Line foul called. The touch was claimed, but given. No, the player is still alive. The Gujarat runner yes, he has been taken out, asked by the match referee. And 8-0. So, what, 90 seconds remaining now for Maharashtra in their innings. They can have more targets if they can pick off the final third runner from this set. How much longer can
Gujarat last runner survived. This is number 11 Urvesh Marwadi. इनफैक्ट गुजरात के लिए सबसे अच्छा काम उनके आखिरी सेट ने किया। एक और सब्स्टिट्यूट महाराष्ट्र ने कर लिया है। नंबर 1 अहीर को बाहर बुलाया है, पर आखिरी जो सेट है उसने सबसे अच्छा खो, डाइविंग अटेम्प्ट और गिरते गिरते खो दे दिया। दैट वाज गुड क्लेवर थिंकिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र चेजर। आखिरी 50 सेकेंड 9 पॉइंट बन गए। पहला सेट वापस आ गया डबल फिगर में। क्या महाराष्ट्र पहुंच पाएगा? Well, that's exactly what they're trying to do. There you see the Maharashtra runner just giving up, run out of gas there, and that is easy picking. So still 30 seconds plus remaining in this innings for Maharashtra. They've got the chance to get into double figures. First set of runners back from Gujarat. How much longer can they do? Touch field and given. So Maharashtra have now gone into double figures. 10 points is what they have scored so far in this innings. Remember, it was a running back tap. Celebration time indeed for Maharashtra. Time's up. पहली इनिंग्स खत्म हो चुकी है। टॉस गुजरात ने जीता था और महाराष्ट्र को चेज करने का न्योता दिया था, खुद डिफेंड करने का फैसला किया था। और महाराष्ट्र, जो कि खो खो का सबसे बड़ा पावर हाउस माना जाता है, अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार खेले। डबल डिजिट में अगर आप स्कोर कर लेते हैं चेज करते हुए, तो दैट इज अ वेरी Overcast skies here in Guwahati, where we are outdoors. Kho India Youth Games Kho kho under 17 boys final. Maharashtra have made a very, very emphatic start, picking up 10 points in their first innings. Gujarat, which chose to run first, which means that they were defending but not able to do a very good job. The first set was the strongest runners and taken out by the Maharashtra chasers. As you see, Urvesh Marwadi defended for 3 minutes 43 seconds for Gujarat. The best running, that he was the third set runner and was taken out for the 9th point by Maharashtra. And Maharashtra have now will try and reduce Gujarat to a minimum. If there is a lead of 6, then a follow-on is optional. Rishikesh Shinde, 2 dismissals for him so far. Good diving attempt by the number 12 from Maharashtra. And now, at the moment, he looks like he could be among the first set of runners, because he's just retying his shoelaces and getting up. अब ऋषिकेश शिंदे और उन तमाम टीममेट्स का ये कर्तव्य है, ये उनकी स्ट्रेटजी होगी कि कम से कम टच कंसीड किए जाएं। महाराष्ट्र ने पहली पारी में 10 पॉइंट्स लिए हैं और अगर गुजरात मान लीजिए एक ही पॉइंट ले पाती है तो उनको फॉलो ऑन का सामना करना पड़ेगा। लीड ऑफ 9 एंड 9+ मींस कि आपको फॉलो ऑन मिलेगा। 6, 7 या 8 पॉइंट की अगर विरोधी टीम ने लीड ले ली तो महाराष्ट्र के कैप्टन पर निर्भर करता है कि वो फॉलो ऑन दे या ना दे। तो 6, 7, 8 पॉइंट की लीड फॉलो ऑन देना ऑप्शनल है। 9 पॉइंट या उससे ज्यादा की लीड फॉलो ऑन देना कंपलसरी है। और महाराष्ट्र ने जब पिछली बार गुजरात का सामना किया था लीग मैच में, तो उनको 7 पॉइंट की लीड मिली थी और उन्होंने फॉलो ऑन देकर एक पारी के अंतर से उस मुकाबले को जीता था। Waiting for the match referee's whistle, and the clock starts now. 9 minutes. Gujarat have to try and pick up as many points as possible. Maharashtra would like to delay that for as long as they can. Trying to put the pressure, early pressure on number 9, Rohan Kore. Just running around the chasers, and there are officials on all 4 sides of the mat keeping a close eye on whether the chasers are moving in the right direction. The restrictions all apply on the chasing side. Runners are free to go anywhere as long as they stay within the playing arena. एक रेफरी है
और टाइमिंग अटेम्प्ट, दिस इज गुड स्टार्ट। 1 मिनट के अंदर अंदर पहला टैप मिल गया है गुजरात को, और जिस खिलाड़ी को पहले ही टारगेट किया था, रोहन बापू सोकोरे, आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अमूमन आपके सबसे तगड़े 3 डिफेंडर आते हैं पहले सेट के तौर पर, और गुजरात चूंकि 9 पॉइंट से पीछे है, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि महाराष्ट्र के स्कोर के करीब पहुंचे। गुड स्टार्ट फॉर देम, रवि, विल डेफिनेटली बूस्ट। Definitely, that would be a good moral boost for Gujarat, because if they can take out the first runner quickly, first set of runners quickly, then they have an opportunity to come close. But Maharashtra, being the powerhouse in Kho kho that they are, would be looking to deny that. At the moment, the target is Ramji Kashyap, number 6, and is doing a good job by forcing the Kho several times quickly, forcing the chasers to get up. The more Kho that you give, the more chasers that have to get up, the tougher it gets for the chasing side. And at the moment, it's 2 minutes plus gone. Gujarat still looking for the second point. Remember, the chasers cannot cross the center line. When they get up, they have to decide and commit whether left or right. Ankle tap attempted, but Ramji Kashyap is really giving them a hard time. रवि, अब जो उनके दूसरे साथी डिफेंड कर रहे हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि बीच में आए, रामजी कश्यप को ब्रेक दें, खुद को टारगेट बना के पेश करें, क्योंकि रामजी कश्यप अब धीरे धीरे थकने लगेंगे। देखिए, चेजर ने कमिट नहीं किया, अपने कंधे से कोड़ के रखते हैं चेजर जब भी उठते हैं। दिस कुड बी क्लोज। नहीं, बहुत अच्छा काम किया, जिगजैग में दौड़े, पहले राइट फिर लेफ्ट, चेजर को कंफ्यूज किया, बट रामजी कश्यप विल टायर आउट। तो जो उनके साथी हैं, उनको अब बीच में आना चाहिए, चेजर्स को कंफ्यूज करना चाहिए। Looks like he's still got something in reserve, because he's jogging about and almost teasing the chasers. Diving attempt. Gujarat still fighting, and gives up finally. 3 minutes 16 gone. No, not given. It was, the contact was outside the playing area. रवि, रामजी कश्यप ने अक्लमंदी का काम ये किया कि एक पैर ब्लू जोन में डाल दिया, तो अब उनको आउट नहीं किया जा सकता। एक पैर आपका अंदर था, एक पैर बाहर था, दोनों पैर अंदर होने चाहिए डिफेंडर के। ये डायरेक्शन बदली, ये है रिंग डिफेंस। जब आप घूम के सर्कल बना के डिफेंस करते हैं तो चेजर्स को ज्यादा कंफ्यूजन होती है। रामजी कश्यप एक सुपरस्टार की तरह डिफेंड कर रहे हैं, फिर से बिल्कुल ब्लू जोन के करीब जाके डायरेक्शन बदली। वेरी वेरी गुड डिफेंस। Very, very clever play. Clock running out to about 4 minutes, and finally Ramji Kashyap not giving up just yet. He's still in play. The way he was jogging, I thought he was jogging back to the bench, but finger had not gone up, so he knows he's very much in the game. Oh, clever play, just moved off. Maharashtra running the Gujarat chasers ragged, very, very cleverly moving away. As soon as the dive is made, again evading the diving hands of the Gujarat chaser. Is he going to go in? No. Oh, the third time he's done it. 1 foot in the red, 1 foot in the blue. Cannot be taken out. देखिए, बिल्कुल यहाँ जाके डायरेक्शन बदल ली, एक पैर अंदर, दोनों पैर बाहर जाते तो ये आउट थे। एक पैर अंदर रखा, एक बाहर रखा, वहां से घूम गए। चेजर वहां से यू टर्न नहीं ले सकते। रामजी कश्यप इज अ सुपरस्टार। ये रहे आपके सामने, कितना खूबसूरत इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्लू एरिया का। दिस इज ब्रिलियंट। 5 मिनट हो गए हैं, एक ही पॉइंट मिला है। दिस इज द 5th टाइम रामजी कश्यप हैज डॉज्ड द चेजर। Very, very good running, and celebration kick, and a bit of a injury scare there for Naresh Bhavania. Yes, now. And finally he's been taken out, but he's taken out 5.5 minutes on the clock. 5 minutes 28 seconds. Ankle tap successful for Gujarat, but this is the last of the first runners.
first set of runners. Saurabh Ahir was substituted with about 1 minute on the clock, smartly by the coach, because he knows his strongest runners have to go out and take out the maximum time. So he was relieved of the chasing duties, 1 minute remaining on the clock, so that he could come out refreshed. अभी भी गुजरात पर से फॉलो ऑन का खतरा टला नहीं है। 8 पॉइंट से वो पीछे हैं। 6 पॉइंट की लीड हो तो फॉलो ऑन दिया जा सकता है। 6, 7, 8 पॉइंट की लीड पर फॉलो ऑन देना ऑप्शनल है। 9 या ज्यादा बिल्कुल गिव अप। बट एक्सीलेंट स्टार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र चेजर्स। महाराष्ट्र डिफेंडर्स पहले सेट ने 6.5 मिनट, 6.25 मिनट का टाइम लिया है। अब बचे हुए 3 मिनट में कम से कम 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे गुजरात को फॉलो ऑन टालने के लिए। Not easily done, because Maharashtra runners have come out refreshed. They've had that 6-minute extra break the second set, and of course they will be hoping that all three of them would not be taken out. Even if all three are taken out, still Maharashtra will go into the lead. All 3 second set runners still available. Running target is Chandu Chavare. Gujarat struggling to get anywhere close to that 10 points that Maharashtra have scored. 7+ gone. Diving attempt not given. Maharashtra have been using that blue zone very, very well. Touch claimed but not allowed. There was no touch there. So Gujarat looking at the clock and possibly scratching their head. Possibly they would be facing a follow-on, and now given up. So no touch there, but the Maharashtra runner gave up, handing Gujarat their 4th point, but still 2 runners remain from the second set. एक्सेलेंट डिफेंडिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। ऐसे ही उनको भारत में खो खो का पावर हाउस नहीं कहते। पुरानी जड़ें भले ही महाभारत काल तक ट्रेस करें, जहां रथेरा नाम से ये खेल खेला जाता था। योद्धा अपने रथ पे बैठ के, अपने घोड़ों पे बैठ के, जैसे पोलो खेला जाता है, तकरीबन वैसे खो खो खेलते थे। लेकिन अगर नया इतिहास देखें तो शिवाजी की सेना खो खो खेला करती थी। लोकमान्य तिलक ने इसके नियम लिखे। महाराष्ट्र में खो खो एक कल्चर है। खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग ऐसे खेल हैं जिनमें महाराष्ट्र बेहद मजबूत है। कितना खूबसूरत इस्तेमाल एक बार फिर से महाराष्ट्र नंबर 12 ने किया। ऋषिकेश राजू शिंदे, ये भी वो खिलाड़ी हैं रवि जिनको सब्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन अब प्लेइंग एरिया से बाहर गए हैं। 5 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र के पास है, यानी कि फॉलो ऑन के चांसेस खत्म हो गए, लेकिन 20 सेकंड बाकी हैं। Well, Maharashtra have ensured that they will hold a handy lead when they start chasing, and if they can get into double figures again, then the final target for Gujarat will not be an easy one. Seconds remain, and that will be the 9 minutes for Gujarat. They could manage 5 points only, could not take out the second set, and now they have to try and deny. आपका खो खो के फाइनल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का 10वां दिन है और खो खो में अंडर 17 बॉयज का फाइनल चल रहा है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच। याद रखिए, महाराष्ट्र ने गुजरात टीम को पूल स्टेज में फॉलो ऑन दे के एक पारी से हराया था, लेकिन आज गुजरात थोड़ा सा बेहतर खेले हैं। कम से कम फॉलो ऑन अवॉइड कर दिया है। और महाराष्ट्र के जो नंबर 6 हैं, रामजी हरीशचंद्र कश्यप, एब्सोल्यूट सुपरस्टार इन डिफेंस। उनके कैप्टन भी है रामजी हरीशचंद्र कश्यप। रवि, इस खिलाड़ी ने अपने पलटी डिफेंस से, यानी पीठ दिखा के यू टर्न मारना, जिसको खो खो की भाषा में पलटी डिफेंस कहते हैं, कम से कम 6 बार वो किया और सबका दिल जीत लिया। Wonderful defending by Maharashtra, and of course their captain Ramji Kashyap setting the example. 5 minutes 24 seconds is what he made the Gujarat chasers run, and running them ragged, deceiving them near the end lines, and certainly made life so much easier for his own chasers, because they you see the smiles. They know that they are sitting on a 5-point lead and can
can afford to take things slightly easier now in the second round of chasing. But remember, Gujarat have just completed chasing, so they're certainly looking to make a mark, but they are tired. They've just finished 9 minutes of chasing with little success. So both physically and mentally, Gujarat would be on the back foot. Maharashtra feeling very, very confident. Fair bit of a number of Maharashtra supporters in the stands, excitedly watching Kho kho action. Where else would they go if it's Kho kho? एब्सोल्युटली, अगर आप महाराष्ट्र कंटिंजेंट में हैं और आपका इवेंट नहीं है तो यहाँ आइए. लगातार हमें जय भवानी, जय शिवाजी, ऑफ कोर्स द स्माइलिंग फेसेस उद्घोष सुनाई दे रहे हैं. गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं. महाराष्ट्र के सपोर्टर्स के खिले हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं. और ये देखिए, महाराष्ट्र के कंटिंजेंट जितने यहाँ मौजूद है, टीम वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर रही है रवि. और इस तरह के जोशीले उद्घोष आपको और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने को प्रेरित करते हैं. In case you're wondering how do these people know that they are on TV, the television feed is also being displayed on the big screen inside the athletics arena, so they know. Back to the action. Maharashtra are chasing in their second innings. Gujarat got just 5, so Maharashtra will now look to increase the lead 10-5. Maharashtra in dark blue chasing. Dark blue and red shirts, blue and white shirts for Gujarat. This is the Maharashtra second innings chasing. So Gujarat have their own chasing to come, but here they would hope to try and restrict Maharashtra to a low score so that their target before them is manageable. गुजरात ने बड़ी मुश्किल फॉलो ऑन बचाया. 5 पॉइंट की लीड मिली महाराष्ट्र को. अगर ये लीड 6 पॉइंट की होती तो महाराष्ट्र फॉलो ऑन दे सकते थे. ऑप्शनल था, पिछली बार दिया था, कमिट नहीं किया, एंड लाइन तक लेकर आए और पॉइंट नंबर 11, लीड 6 की हो चुकी है. यानी टारगेट यहीं से ही गुजरात के लिए 7 का है. Shoulder tap. Now that's how close. I beg your pardon, that contact was outside in the blue zone, so not given. Point not scored by Maharashtra. It was disallowed because the player was at the end, had one foot inside the blue zone, came back. The touch will be allowed only when the player is inside the red zone. Of course, both feet going out, the runner is automatically given out, but no individual gains credit for the touch. There you see, given surrender. अब कोई चारा नहीं था, लेकिन अच्छी शुरुआत की है गुजरात ने अपने सेकंड इनिंग्स डिफेंस की. तकरीबन 2 मिनट बाद, 2 मिनट के भीतर महाराष्ट्र को पहला पॉइंट मिला है. पर दिक्कत यह है गुजरात के लिए कि पहली इनिंग्स की लीड ही 5 पॉइंट की है महाराष्ट्र के पास. तो डायरेक्शन का फाउल है. टर्न करके अपने नजदीकी साथी को या खो दीजिए या फिर दौड़िए. उस डायरेक्शन में आप वापस नहीं जा सकते. बुनियादी नियम है खो खो के, वही नियम जो हमने स्कूल में खेले थे, स्कूल में खेलते हुए यूज किए थे. बस फर्क यह है, तब 9-9 मिनट की 4 इनिंग्स का अंदाजा किसी को नहीं था. सब फन के लिए खेला करते थे, लेकिन यहाँ प्रॉपर नियमों के साथ गेम चल रही है. और 2.5 मिनट में एक ही पॉइंट मिला है. ओह, ताल ठोकी है गुजरात के डिफेंडर ने कि पकड़ के दिखाओ. वही थाई 5 जो कबड्डी में किया जाता है. Getting a little ragged there. The Maharashtra chasers not able to pick up the second points. The clock is reaching the 3-minute mark. So Gujarat doing some good defending, and now taken out Urvesh Marwadi, who had a good first outing, but this time not able to really take things too far. Last runner from the first set still alive for Gujarat. Good sprint, but Thorat was pulled up. Maharashtra struggling in their second
chasing, not able to pick up points as easily as they did in the first innings. So Gujarat still fighting to keep that the target for Gujarat within manageable limits, and at the moment they have been successful. Number 7, Vijay Vitard. Touch claimed but not given. Great defense from Gujarat. Excellent to say the least. पहला सेट ही अब तक 4 मिनट में आउट हुआ नहीं है. बस दिक्कत गुजरात की है कि पहली पारी की लीड 5 की है. यहां अगर मान लीजिए टोटल 4 पॉइंट भी महाराष्ट्र को मिलते हैं, पिछली बार 10 मिले थे, इस बार 4 भी मिले, तो भी 5 + 4 9 पॉइंट की लीड हो जाएगी. यानी गुजरात का टारगेट 10 का होगा. पहली पारी की लीड क्रिकेट में, खो खो में, दोनों में इंपॉर्टेंट है. यहां पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. थर्ड डिफेंडर ऑल्सो गोज आउट. दूसरा सेट अंदर आ चुका है और 8 पॉइंट की लीड, यानी 9 का टारगेट अभी अभी है. There you see the surrender by Vijay Vitard. Ran out of gas and gave up. Now Gujarat have already conceded 3. Let's see how long the second set survives. Clock running at 5 minutes now. Remember, 9 minutes is what Maharashtra have to give them as big a target as possible. Touch claimed and given. The first runner from the second set taken out very easily. A touch made before the player, that was Naresh Bambania, could go to the safety with 1 foot out, sir. So the second set did not start off at the best, but still Gujarat can hope that they have got the target within limits. Already the lead 9 for Maharashtra. Another one, no, not given. यहाँ भी मैच की किस्में खाई जाती हैं रवि. ये भी मैट और मिट्टी का खेल है, जैसे कबड्डी में हम देखते हैं. टारगेट अभी से ही 10 का है. ये एक दिक्कत है. अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा. मान लीजिए अगर महाराष्ट्र के कैप्टन को लगता है कि हमारी लीड बड़ी है, क्या वो अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करेंगे? उसके चांस तो नहीं है. 9 मिनट पूरा खेलना पड़ेगा उनको. 6 मिनट हो चुके हैं. एक और टारगेट किया गया है, टैप हुआ है. 10 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र की. ये देखिए, गुड डाइविंग tap on the back, so 10 points ahead now. Maharashtra and Gujarat would already start wondering what do they need to do to pick up some early points. They need to get the first set out within the first 3 minutes if they hope to score in double figures, but the second set has been taken out in 6.5 minutes, so back to that 1 minute per point rhythm that Maharashtra would have been hoping for. Third set now for Gujarat. Touch claimed but not given. The umpire, this is the last touch again on the back for the last runner of the second set. 2 मिनट बाकी हैं. 11 पॉइंट की लीड ऑलरेडी बन चुकी है महाराष्ट्र की, यानी टारगेट अभी से ही 12 का है. लीजिए, ये तो स्लैप टैप कहा जाएगा. ये साधारण टैप नहीं था, ये स्लैप टैप था. Spice का थप्पा. अच्छा तगड़ा. That's how close. That's what Maharashtra's domination is all about. Once they come into their rhythm, they can really start giving the runners a tough time. Lead now 12. So the gold medal match slowly but steadily slipping out. Will pick up, yes, one more point for Maharashtra. Lead goes up to 13. 14 now. Quick finish of the second set, and now the third set has come in. 19-5. 14 the lead for Maharashtra. Can Gujarat prevent Maharashtra from going into 20s? It's very difficult. 9 पॉइंट बन चुके हैं और 20s में जाना बिल्कुल संभव लग रहा है. 50 सेकंड अभी भी बाकी हैं. यानी कि 9 के 9 प्लेयर ऑलरेडी टच हो चुके हैं. ये पहला सेट है जो वापस अंदर आया है.
ऑलरेडी जो टारगेट है वो 15 का है गुजरात के सामने। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क उनके लिए, क्योंकि महाराष्ट्र ठीक है प्लेयर थके होंगे, ये बात सही है, 2 बार चेजिंग करके वो थके होंगे, लेकिन 15 पॉइंट बनाना आखिरी इनिंग्स में ठीक वैसे है जैसे क्रिकेट की चौथी पारी में 500-600 का टारगेट चेज करना। Looking like a bigger target than that here, because 15 points means you've got to take out 3 sets of 5, and now that for a team that could not take out the second full set. 9 minutes done, 19-5 is how they finish. So Maharashtra have set a 15-point target for Gujarat. When we come back, it will be now Maharashtra defending Gujarat. इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये जया, विजय और हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के खो खो प्लेयर सब एंजॉय कर रहे हैं। अंडर 17 खो खो बॉयज का फाइनल चल रहा है। महाराष्ट्र सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है भारत में खो खो की, जहां पर ये स्लैप टैप, ये हाईलाइट है, ये स्लैप टैप था, एक नया शब्द हमने जोड़ दिया है खो खो की डिक्शनरी में। और टारगेट जो मिला है गुजरात को काफी मुश्किल है, उनको 15 पॉइंट बनाने हैं, यानी जो 3 डिफेंडर आए हैं, एक सेट में 3 डिफेंडर, ऐसे 5 सेट्स को आउट करना है। इट्स अ हरक्यूलियन टास्क टू से द लीस्ट। Well, when they were chasing the first time around, they could not complete the second set as well. One runner was remaining when the 9-minute clock ran out. So we'll have to wait and see how the Maharashtra runners perform. The first set not even come anywhere close to the chasers, keeping a very healthy distance. All 3 on the same side, not the best strategy, but then again switching sides easily, and the targets are keep changing. So that is the still confusing one for the Gujarat chasers. Threatened to go one way, turn the other way. Very well done by Maharashtra's Siddhesh Thorat, who's been chased down by the Gujarat chasers. Oh, touch claimed and given. Yes, an ankle tap given. I beg your pardon, that was Abhishek Bhosle who was sent out in the first one. So 1 point scored, just over a minute gone. तो सीधा सीधा गणित है, पहले ये देख लीजिए कितना खूबसूरत एंकल टैप। किसी भी चेजर का सबसे फेवरेट ये मूव होता है, क्योंकि एंकल आपकी रीच में थोड़ा ज्यादा जल्दी होता है। गणित ये है कि बचे हुए 7.5 मिनट में आपने 14 पॉइंट लेने हैं, यानी तकरीबन 2 पॉइंट्स पर मिनट। और महाराष्ट्र की टीम इतनी अपील की गई है, बड़ी ढीली ढाली अपील थी, अंपायर ने कुछ रिएक्ट भी करना मुनासिब नहीं समझा। उम्मीद ज्यादा, विश्वास कम। एज ओल्ड डायलॉग। Gujarat making replacements in their set of chasers. Remember, the game does not stop while the chasing side makes replacement, because they are losing that opportunity for those few seconds where the chaser is away from the chasing block. The chasing block is the area where the chasers squat. Safety claimed but not given. So Vishal he's gone. Safety claimed but not given. Point awarded to Gujarat, but the last runner from the first set is still on. This is shot number 5, Chandu Chavare. Came on in the second set and wrong direction ruled. The moment you hear the whistle, you know that the chasers have been penalized. There is no penalty on the runners. They can run wherever they want, and yes, point given. Ankle taps. The first set of 3 runners have been taken out in 2 minutes 48 seconds. There you see the diving tap on the ankle. Officials on all 4 sides of the court, keeping a very, very close eye on the action. Now this is the tough one. सौरभ अहीर हैं, और इनफैक्ट हमारी नजरें हैं नंबर 6 रामजी हरिश्चंद्र कश्यप पर। अगर वो इस सेट में हैं, इस सेट में नहीं है, उनको आखिरी सेट के लिए रखा गया है, क्योंकि वो थक गए थे पिछली बार दौड़ कर, उनकी शायद नौबत भी ना आए। पहले सेट ने तकरीबन 3 मिनट ले लिए हैं, और बचे हुए 5.5 मिनट में 12 पॉइंट लेने हैं, तो
पर मिनट 2 से ज्यादा टैप करने होंगे गुजरात को फाइनल लेने के लिए, या सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र, आज हमने सुबह देखा 9 गोल्ड मेडल आगे थे हरियाणा से, यहां एक और गोल्ड मेडल जो उनकी मुट्ठी में माना ही जा रहा था, चले जाना चाहिए तकरीबन 5.5 मिनट के बाद। पर हरियाणा ऑफ कोर्स, चूंकि रेसलिंग के इवेंट अभी आज होने हैं, बॉक्सिंग आनी है, कोशिश करेगी कि वहां से वापसी करे। महाराष्ट्र के लिए खो खो के अलावा चूंकि इसके बाद स्विमिंग के इवेंट्स हैं, कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र भी वहां से कुछ मेडल निकालने की कोशिश करेगा। Maharashtra easy pickings on this Kho kho gold medal. They already won the under 17, defeating under 21 boys, taking the final against Kerala yesterday, and today the under 17 boys final also turning out to be a rather one-sided affair, because the lead is 11, clock down to 4:30. Not looking good for Gujarat. They're trying hard. They need something and need something quickly, but will not be allowed to do that. Siddesh Thorat being targeted, running the chasers ragged. Thorat changing direction, challenging. Oh, now that is teasing that. Once he knew he was about to surrender, so said, well, a bit of something for the highlight reels is good. ये देखिए, अच्छा डाइविंग टैप था ये, लेकिन वो टच क्लेम करने से पहले थोड़ी लाइमलाइट जरूर ले ली महाराष्ट्र के डिफेंडर ने। 10 पॉइंट का फासला, यानी 11 का टारगेट अभी और बाकी है। 5 मिनट में 11 पॉइंट क्या हासिल कर पाएगी गुजरात? और पिछली चेजिंग इनिंग्स में गुजरात ने 5 पॉइंट लिए थे, इस बार थोड़ा बेहतर किया है, 5.5 मिनट में 4 पॉइंट ले लिए, बट नॉट गुड इनफ टू बीट अ स्ट्रॉन्ग टीम लाइक महाराष्ट्र। Well, let's not forget the Maharashtra runners will also have been tired, because they've completed their both innings of chasing, get a total of 10 and 9 in the 2 innings for a total of 19 points. So the total, the target for Gujarat was reach a total of 20. Still 11 off. 6 minutes gone. 3 to go. Second set of runners still on the mat. Oh, it's time a dive on Saurabh Ahir given. So Gujarat pick up their 5th point. The second set, last runner now will be trying to run the clock down as much as he can. 3.5 मिनट बाकी हैं और गुजरात इनफैक्ट महाराष्ट्र के आधे स्कोर तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया है। पर गुजरात इनफैक्ट खो खो में कभी बहुत बड़ी शक्ति रहा नहीं। महाराष्ट्र के बाद केरल का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, दिल्ली का जरूर नाम आता है खो खो में। और जहां अगर गुजरात फाइनल में पहुंचा है रवि, तो ये वॉलीबॉल जैसे, जूडो जैसे खेलों का एक आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन है कि गुजरात ने अब खेलों की दुनिया में भी, कम से कम भारत में, अपने चैंपियन खिलाड़ी पैदा करने और भेजने शुरू कर दिए हैं। ऑल थैंक्स टू जो 1-2 इनिशिएटिव गुजरात के खेल विभाग ने लिए थे। खेल महाकुंभ जो हर साल हो रहा है तकरीबन 10 साल से, तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर, जहां हजारों प्लेयर भाग लेते हैं। फिर धनराज पिल्ले, डॉक्टर बीर सिंह यादव, गगन नारंग जैसे दिग्गज खिलाड़ी गुजरात जाकर वहां के खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं। और खो खो का रिजल्ट भी आपके सामने है, गुजरात प्लेइंग द फाइनल्स। Well, certainly it is quite satisfying for the Gujarat sports that they are able to pick up so many medals. Maybe silver, not gold, but wouldn't be too disappointed. But Gujarat was never considered a very strong Kho kho team, but they are still there in the medals, and that is great news for Gujarat Kho kho, because they have given a good performance, managed to defeat teams like Karnataka and Andhra Pradesh in the league, and go through to the semi-finals, where they took out Kerala in a very close encounter, 13-10. But nonetheless, they have knocked out the powerhouses. All 3 powerhouses, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तीनों मजबूत टीम्स, मजबूत राज्य माने जाते हैं। तो खो खो के लिए बहुत अच्छी सूचना है। एक और टच,
11 पॉइंट गुजरात के आखिरी आधा मिनट है। तो खो खो के लिए अच्छी खबर ये है कि जो पहले 5 बड़े राज्य थे खो खो में, उनके साथ अब गुजरात का नाम भी एक सांस में लिया जाएगा। वॉच आउट महाराष्ट्र, अगले संस्करण में गुजरात कड़ी टक्कर देंगे आपको। और यही मकसद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। हर खेल बाउंड्रीज को तोड़कर अलग अलग राज्यों में पहुंचे। और हम कभी ये ना कहें कि खो खो में सिर्फ 4-5 राज्य मशहूर हैं या हॉकी में सिर्फ 4-5 राज्य ज्यादा बड़ी शक्तियां हैं। आखिरी 10 सेकेंड अंडर 17 बॉयज खो खो फाइनल के। महाराष्ट्र 8 पॉइंट्स की जीत के बिल्कुल करीब हैं और मेडल टैली में आज सुबह 49 गोल्ड देखे थे। जो इवेंट हम लाइव देख रहे हैं, ये 50वां गोल्ड मेडल कंफर्म है। वेल डन महाराष्ट्र, बैक टू बैक गोल्ड मेडल्स। अंडर 21 बॉयज के बाद अंडर 17 बॉयज में भी महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल जीता है और बिना किसी बड़ी चुनौती के जीता है। तकरीबन एक तरफा मुकाबले में जीता है, 8 पॉइंट के बड़े मार्जिन से जीता है। साथ में तारीफ गुजरात की भी होनी चाहिए कि खो खो में जिस राज्य का नाम तक नहीं सुना जाता था, उसने सिल्वर मेडल हासिल किया है, फाइनल पहुंचे हैं। Well, definitely celebration time for Maharashtra, but Gujarat can also afford to celebrate because they have taken the silver medal in this contest. So the boys under 17 Kho kho gold medal goes to Maharashtra with that 1911 win over Gujarat. That is certainly great news for Maharashtra, but Gujarat will not be too disappointed. Maharashtra team paying their respects as is traditional to the mat and post, because those are things that are a key part of this very, very traditionally Indian game. एकदम भारतीय संस्कार, कुश्ती हो, कबड्डी हो, खो खो हो, हमेशा अपने मैट को या अपने रिंग को हमेशा सम्मान दिया जाता है। ईश्वर को मैच से पहले, मैच के बाद धन्यवाद दिया जाता है और यही संस्कार हैं जो भारत के खेलों को या भारत की संस्कृति को सबसे जुदा बनाते हैं। और उसके बाद आइए अपने प्रतिपक्षी खिलाड़ियों से भी मिलिए, ऑफिशियल से मिलिए, सेलिब्रेट कीजिए। आपने अच्छी जीत हासिल की है और अगर आप जीते नहीं हैं तो आपने कम से कम फाइनल में पहुंचकर सबका मनोरंजन जरूर किया है। महाराष्ट्र गोल्ड मेडल मिला है खो खो अंडर 17 बॉयज टीम को।